प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा 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 आजा। जमुना के तट पर नटखट बंसी वाले की बंसी वाले राधा नाचेगी, बंसी वाजेगी 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 राधा नाचेगी। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा 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 आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, वो पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से घलिल लोटांगण वंदन चरण डोळान पाय रूपंजी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महद्योः शान्तिरक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्ति आरार्तिकम्। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहणाकं महिमान् सचन्त यत्र पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनिगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णवल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणात् परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगज्जननी पद्मावती माता की जय, पापतापहरणी इंद्रायणी माता की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राम।
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणमकुतस्ते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरमण जाने कोय। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वंशा कल्पतरु तड़ंद्वित पिनंदित पीतांबरधारी नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिभांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरण अनुरागियों एवं मेरी सभी मातृशक्तियों,
आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आध्यात्मिक, राजकीय और ऐतिहासिक परंपरा युक्त पुणे नगरी, पुणे शहर और इस पुणे शहर के अंतर्गत पाप ताप हरणी माता इंद्राणी का पवित्र तट, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का चरण सानिध्य, जगत जननी माता पद्मावती का पावन दरबार और इस जगत जननी माता पद्मावती के इस भव्य मंदिर का चतुर्थ वर्धापन दिन, इसी उपलक्ष्य में संपन्न होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखते देखते आज हमारे कथा का पंचम दिन प्रारंभ होने जा रहा है और इस पंचम दिन के सत्र को हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीते हुए सारे सत्रों में मैं एक बात अवश्य कहते आ रहा हूं, दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूं। जीवन में जब भाग्यों का उदय हो जाता है, जीवन में जब पुण्यों का उदय हो जाता है, तभी हमारे जीवन में कथा कीर्तन प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा पुरुषो वै। जब अनंत जन्मों का भाग्यों का उदय हो जाता है, तभी हमारे जीवन में भगवत नाम संकीर्तन सुनने का और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर से आप और हम पुण्यशाली हैं। इस जगत जननी माता पद्मावती के भव्य प्रांगण में कलकल वाहिनी मां भगवती गंगा का रसपान करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज मेरा परम सौभाग्य है आज की कथा का लाभ लेने के लिए और इस बालक की तोतली वाणी सुनने के लिए हमारे परम स्नेही, जिन्होंने यहाँ कई साल सेवा की, परम आदरणीय चाटे महाराज जी, गुट्टे महाराज जी, विनायक जी महाराज गुट्टे, भरत जी महाराज गुट्टे जी एवं मेरे ऊपर जिनका परम स्नेह है, भोसरी क्षेत्र में वारकरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे स्नेही परम आदरणीय हरिभक्त परायण इंगोले जी महाराज एवं सहपरिवार आज कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित है। व्यास मंच से सबके लिए साधुवाद। आज की कथा का रसपान करने से पूर्व जिस भगवान ने हमें पवित्र वाणी दी है और जिस भगवान ने हमें पवित्र दो हाथ दिए, दी हुई वाणी का और दिए हुए हस्त इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का अल्प समय में सहारा लेंगे और इस हस्त इंद्रियों को, रसना इंद्रियों को भगवत नाम से पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। समय बहुत कम है, अल्प समय में ही भगवत नाम संकीर्तन का आनंद उठाएंगे। सभी लोग हाथ ऊपर उठाते हुए हरि बोल। सभी लोग, क्या बात है, जय हो।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। जरा दो हाथ ऊपर उठा दो एक साथ। हाँ। क्या बात है? क्या हो? गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बरसा में राधे राधे कुंजलनी में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे बंसी तट में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे आलमदी में राधे बेहुगांव में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
प्यार से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। विरक्त शिरोमणि आचार्य सुखदेव जी की संहिता श्रीमद् भागवत कथा का रसपान, भक्त वत्सल करुणा सिंधु दीन बंधु पतित पावन मेरे भगवान की मधुर लीलाएं राजा परीक्षित जी को आचार्य जी सुना रहे। नंदन नंदन यशोदानंदन ब्रज चंदन भगवान बालकृष्णाचा काल आपण या जगज्जननी पद्मावती मातेच्या भव्य प्रांगणात कृष्ण जन्म साजरा केला। काल बोलून गेलो, पुन्हा दृष्टी टाकेल। या मृत्यू लोकात या धरतीवर भगवान केव्हा केव्हा अवतार धारण करतात। अवतार या शब्दाचा अर्थ व्याकरणाच्या दृष्टीने जर पाहिला तर तू तरती धातूपासून अवतार हा शब्द तयार होतो, जो तारण्याकरिता इतरांच्या उद्धाराकरिता जो अवतरित होतो अवतार, तू तरती तारणे। आणि माझ्या भगवंताने वत्सरूपी पृथ्वी ब्रह्म्यापासी जाय नेत्रीवाय तोय सांगत असे। जेव्हा तिची वेदना व्याकुळता दुःख भगवंताकडे प्रगट केल्याच्या नंतर भगवंताने फुल मॅनेजमेंट करून मृत्यू लोकात अवतार घेतला। काल बोलून गेलो, आचार्य तुलसीदास गोस्वामी रामायणाच्या चौपाईमध्ये सांगतायत, ज्या ज्या वेळेला अधर्म वाढतो, धर्माची हानी होते, त्या त्या वेळेला भगवान अवतरित होतात। आचार्य तुलसीदास गोड सांगतायत, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। करी अनिति जाई नहीं बरनी सीधा ही विप्र दिनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। आचार्य जी तुलसीदास जी की कितनी मीठी वाणी है। जब जब हो ये धर्म की हळी, ज्या ज्या वेळेला धर्माची हळी होते, अधर्म वाढायला लागतो, धर्म बुडायला लागतो, तब तब धरे प्रभू विविध शरीरा। त्या त्या वेळेला भगवान विविध अवतार धारण करतात। आणि मग आपण काल पाहू गेलो, वसुदेव आणि देवकीने भगवंताचा जन्म आपल्या उदरी व्हावा म्हणून अनेक वर्षाची तपश्चर्या फलश्रुतीला आली। आणि भगवंतानी मॅनेजमेंट केली। आपल्या पूर्ण बालगोपालांना सांगितलं, तुम्ही ब्रजमंडलमध्ये जन्म घ्या। आल्हादिनी शक्ती भगवंताची तिला सांगितलं, तू बरसाण्यामध्ये वृषभान दुलारी श्री राधाराणीच्या स्वरूपात जा। आणि भगवंताचे जे भ्राता आहेत पूर्वजन्मातले लखन भैया, त्यांना सांगितलं, या वर्षी या वेळेला तुम्ही बलराम स्वरूपात जा, ज्येष्ठ तुम्ही व्हा। आणि काल आपण पाहिलं, कारागृहामध्ये भगवंताचा जन्म झाला। ठीक रात्री 12 वाजता जन्म झाला। आणि जेव्हा भगवान गोकुळात गेले तेव्हा अख्ख्या गोकुळात आनंद ही आनंद साजरा झाला। मग आपण काल खूप मस्ती केली या ठिकाणी, चॉकलेट, खेळणी, दांडिया। साक्षात गोकुळ, गोकुळ काटे कॉलनी नाही तर साक्षात गोकुळ वृंदावन अवतरित झालं होतं।
कारण त्या गोकुळाचा इतिहास असा आहे, नंदबाबा आणि यशोदा माई याला अनेक वर्ष झाले विवाहाला, पण संतती नव्हती. आणि जेव्हा विप्र देवतांनी यशोदा मैया आणि नंदबाबाला सांगितलं जर संतती प्राप्ती होत नसेल तर गोपाल सहस्त्रनामाचा पाठ करा, कारण भगवंताच्या नामात एवढी ताकद आहे. जर आपण भगवंताचं नामस्मरण जप केला, साधना केली, अनुष्ठान केलं तर आपल्या अनंत जन्माचं क्लेश दुःख दूर होतं. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. एवढं सामर्थ्य माझ्या गोविंदाच्या, माझ्या कन्हैयाच्या नामात आहे. आणि यशोदा मैया आणि नंदबाबांनी गोपाल सहस्त्रनामाचा पाठ केला, फलश्रुती जगत पिता त्यांच्या घरी पुत्र म्हणून जन्माला आला. आणि काल आपण पाहिलं वेळ प्रचंड कमी होता. जेव्हा यशोदा मैया गरोदर होती तेव्हा तिच्याजवळ, यशोदा मैयाजवळ नंदबाबाची बहीण, तिचं नाव सुनंदा, नंदबाबाच्या बहिणीचं नाव काय आहे? सुनंदा होती. आणि 99% प्रायः नंद हजर असते घरात अशा शुभ प्रसंगी, कारण ती कोण होणार असते? आत्या. आणि जेव्हा जगातलं पहिलं हे ऑपरेशन म्हणावं किंवा प्रसूती म्हणावी, की ज्या बाळाला आईने जन्म दिला तिलाच माहिती नाही की हा कधी जन्माला आला, कारण आवली आहे. आणि जेव्हा सुनंदाने पाहिलं की यशोदा मैयाला लाला झाला, ती आनंदाच्या भरात नंदबाबाला जाऊन सांगायला लागली, नंदबाबा बधाई हो. काल आपण बधाई दिली ना, नंदबाबा बधाई हो. नंदबाबा बोले, बोल तो बहना क्या हुआ? या खाली बधाई बधाई करेगी, हुआ क्या? सुनंदा बोली, भैया तुझे बाद में बताऊंगी तुझे क्या हुआ, लेकिन पहले ये बता तू मुझे क्या देगा. प्यार से बोलो राधे राधे. मी तुला नंतर सांगेल, तुझ्यासाठी गुड न्यूज आहे, पण पहिले मला एक सांग, तू देणार काय? नंदबाबा म्हटले, अगं तुला काय पाहिजे सांग. ड्रायक्लिंगची साडी? सुनंदा म्हणली ना. मग काय पाहिजेत? हिरे माणिक मोती ना. आणि मग सुनंदाने काय मागितलं असेल तर सुनंदा म्हणाली, भैया नंदराज मला वहिनीच्या गळ्यात जो नवरत्नाचा हार आहे ना तो दे. प्यारशे बोलो राधे राधे. हे ननंद नावाचं जे पार्ट असतं ना संसारिक लोकांच्या जीवनात, हे फार विचित्र असतं. तिला काही द्या समाधान मिळत नाही, फक्त वहिनीच्या गळ्यातल्या वस्तूवर तिचा डोळा असतो. हा, तिला बाकी दुनिया दिली तरी तिला सुख भेटत नाही. तिला काय पाहिजे? जे वहिनीकडे आहे ते. हा फार विचित्र पार्ट आहे हा. नणद नावाची वहिनीच्या गळ्यातला नवरत्नाचा हार पाहिजे. नंदाबाबा देला, चल काय झालं? आणि महाराज सुनंदाने शब्द काढला, भैया तू बाप झालास, बधाई हो. लाला भयो है. काय झाला? मुलगा झाला. नंदबाबांनी ही बातमी ऐकता क्षणीच महाराज ज्ञानोबारायांच्या उक्तीप्रमाणे नंदबाबाला एवढा आनंद झाला, एवढा आनंद झाला, कारण लग्न होऊन बरेच वर्ष झाले, संतती नव्हती. ज्ञानोबारा ज्ञानेश्वरी सांगतायत, वैशीची या सेवटी एकची होय वांझुटी, मोहाची त्रिपुटी नाचू लागे. अरे एखाद्या माता भगिनीला जर लग्नानंतर 20-25 वर्षानंतर जर मुलबाळ झालं ना तर तिला किती आनंद होतो या ओवीत माऊली प्रगट करतायत. वैशीची या सेवटी, वयाच्या शेवटी शेवटी तिचं वांझुटे पण नष्ट झालं, वात्सल्य प्रेम जागृत झालं आणि मोहाची त्रिपुटी नाचू लागे. नंदबाबाला आनंद मावे ना. आमचे ब्रज रसिक संत सांगतायत, नंदबाबा आनंदाच्या भरात गेले आणि यमुनेत उडी मारली, सचल स्नान केलं आणि बाहेर आले. गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान,
जेवढे म्हणून दानाचे प्रकार आहेत नंद बाबा देत गेले. ब्राह्मणांना बोलवलं, भगवान परमात्माचा जन्म झाला, स्वस्ती वाचन केलं. हरी ओम महा स्वस्तिना इंद्रो वृधश्रवा स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा स्वस्तिना अर्षणेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर दधातु. स्वस्ती वाचन केलं, ब्राह्मणांना तिलक केलं, वैष्णव वारकऱ्यांना तिलक केला आणि आनंदाच्या भरात जे हाताला येईल ते दान घेतलं. त्याचं कारण आहे महाराज, आनंदाच्या भरात दिलेलं दान हे 100 गुणा आपल्याला फलदायी ठरतं. म्हणून इन्कम टॅक्सवाले घरी आल्यानंतर आळंदीच्या संस्थेला दिलेलं दान एवढं श्रेष्ठ ठरत नाही, कारण ते संकट आल्यावर दिलेलं दान आहे. जेवढं स्वखुशीने आनंदाने दिलेलं दान हे हजारो पटीने फलदायी ठरतं. 99% लोक असे पाहिले आम्ही मुंबई पुणे सिटीमध्ये, संकट आलं ना आणि मग दान. सर्वात जास्त दान केलं आमच्या माता भगिनींनी. कधी? जेव्हा 6 वर्षापूर्वी रात्री 12 वाजता नरेंद्र मोदी म्हणले होते, मेरे भाई और बहनों, आज से 500 की और 1000 की नोट बंद हो जाएगी. आणि मग दुसऱ्या दिवशी यांनी दान द्यायला सुरुवात केली. त्या दानाला महत्त्व नाही, जे आनंदाच्या भरात दिलेलं दान ते श्रेष्ठ. प्यार से बोलो राधे राधे. जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो. नंदबाबांनी आनंदाच्या भरात बधाई दिली आणि महाराज त्या गोकुळात आनंदही आनंद चालत होता. आणि तो गोकुळातला आनंद कसा होता, एका बधाई स्वरूपात आपण आनंद ऐकूया. नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. हा तर आपण काल पाहिलाच, पण ब्रजभूमीमध्ये नंदबाबाच्या घरी किती आनंद होता. सर्वांनी मोठ्या प्रेमाने या गुरुजी गातील त्या बधाईचं आपण गान गाऊया. सर्वांनी हात वर करा. नंद जी को, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई. 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई. नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई. चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली. नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई.
साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूद धूम मचावे राधेश नाच कूद धूम मचावे मीठी बोले बान 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 बान। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जियो लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। जियो लाल तुम्हारे ये आशीष हमारी। जुग जुग जियो लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जुग जुग जियो लाल तुम्हारे ऐसी देई आशीष सब मिल। ऐसी देई आशीष सब मिल काम ब्रिज बनवारी। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सवार बधाई लोगो तो सवार बधाई लोगो लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। रही आज बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय। आज के आनंद की जय। प्यार से बोलो राधे राधे। आणि नंद बाबाच्या अंगणात असा आनंद चालू होता। नंद जी के आंगणों में बज रही बधाई। आणि या भजनातलं एक कडवं छान गायलं गुरुजींनी। चमत्कार ऐसा हो गया। बोले क्या? नंद बाबा की जो सफेद दाढ़ी थी ना वो रात रात में पूरी काली हो गई। आनंदाच्या भरात काय केलं असेल नंद बाबाने? अहो डाय लावला असेल, दुसरं काय? एका रात्रात सफेद दाढी काळी होते म्हणजे काय केलं असेल? डाय लावला असेल। बरं, नंद बाबाच्या अंगणाचं वर्णन करत असताना नंद बाबांनी कृष्ण जन्माला आला, मुलगा जन्माला आला म्हणून व्यवस्था कशी मॅनेजमेंट परफेक्ट होती। काल आपण भजन गोड गायले, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी जय कन्हैया। अब आगे बात सुनो। जब जब जो इंसान जो माता जी आती थी बधाई लेने के लिए तो उनके भोजन खान पान की मेरे भगवान ने व्यवस्था की है। और नंद बाबा ने क्या किया? जो जवान थे युवा उनके लिए लड्डू बनाए, और जो बूढ़े बूढ़े थे उनके लिए क्या बनाई? जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी जय कन्हैया, बूढ़ेन को लापसी। प्यार से बोलो राधे राधे गुरुजी। हनुमान महाराज राधे राधे। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी जय कन्हैया। हे पदार्थ असे आहेत नंदबाबांनी बनवलेले। जे तरुण आहेत ज्यांचे दात मजबूत आहेत त्यांच्यासाठी लड्डू, लड्डू म्हणजे लाडू। बघा लाडू जर चाचणी थोडी काय म्हणतात तर चाचणीच ना, थोडी परिपक्व झाली तर लाडू कडक होतात। आणि मग ज्यांचे 32 गेले त्यांना चावता येत
मग ही व्यवस्था कुणासाठी? जवानांको लड्डू और बूढ़ेंको लापसी. लापसी बुड्यांसाठी का? तर लापसी असा पदार्थ आहे आणि मला वाटतं योगायोगाने काल लापसीच होती. कालच होती का लापसी? म्हणजे भगवंताची लीला बघा. आपला लापसीचा पदार्थ कृष्ण जन्म एका दिवशी आला. लापसी असा पदार्थ आहे तो आचारी फक्त जातीवंत असावा लागतो लापसी बनवणारा. लापसी असा पदार्थ आहे तो जर बनवला आणि जर चांगला क्वालिटीचा बनवला, जर आपण जिभेवर ठेवला ना, त्याला स्पीड ब्रेकर नाही, डायरेक्ट नॉनस्टॉप आत जातो. चावण्याची गरज. हा बापू आपल्या परिसरात एक बुवा आचारी म्हणून आहेत, तापकीर वाडीत बुवा आचारी, वय झाला आता त्यांचं. लापसी एक नंबर बनवतात बुवा आचारी. आत मी त्यांना स्वतः वृंदावनला 4 वेळा घेऊन गेलो फक्त लापसी बनवण्यासाठी. तिकडचे आमचे जेवढे आखाड्याचे मंडलेश्वर साधू आहेत सर्वांना इथली लापसी बनवून खाऊ. लापसी असा एक नंबर पदार्थ असतो. म्हणून नंदबाबांनी मॅनेजमेंट केली, बुढेनको लापसी म्हणजे चावण्यासाठी त्रास. नंदबाबाच्या अंगणात आनंद चालू आहे. पण सृष्टीचा नियम असा आहे, एखाद्या वस्तूचा, एखाद्या पदार्थाचा, एखाद्या घटनेचा, एखाद्या तत्वाचा आनंद सर्वांनाच होईल असं सांगता येत नाही. इकडे नंदबाबा अख्ख्या ब्रजभूमीला आनंद झाला. पण आता थोडं रिवर्स चला. काल आपण संत ज्ञानेश्वर स्पाईन रोडला कोणाला ॲडमिट केलं होतं? असं कसं व्हायचं बरं एवढ्या लवकर विसरल्यावर? अहो काल आपण ॲडमिट केलं होतं ना 10:30च्या दरम्यान, 10:15च्या दरम्यान एका व्यक्तीला. कुणाला? कंसाला. म्हणजे तुमचा नातेवाईक नसल्यामुळे तुमच्या लक्षात नाही. जायचं नारळ पाणी घेऊन भेटायला, जवळ होतं स्पाईन रोडला. कंसाला ॲडमिट केलं होतं का? आकाशवाणीने सांगितलं ना, ए दुष्ट तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो मेरे से पहिले पैदा होगा. आणि मग कंस ॲडमिट होता, त्याला डिस्चार्ज मिळाला. आणि कंसाने इमर्जन्सी मिटिंगचं आयोजन केलं मथुरा नगरीत. तात्काळ मिटिंगचं आयोजन केलं आणि त्या मिटिंगला मोठमोठे राक्षस उपस्थित झाले. कंसाला विचारलं इमर्जन्सी मिटिंगचं निमित्त काय? कंस घाबरलेला होता, व्हायबल झालेला होता. कारण जेव्हा शत्रू जन्माला आला ही बातमी ऐकली तेव्हापासून कंसाची झोप उडालेली होती. कंसाला माहिती होतं कंस हुशार होता, बुद्धिवान होता, विद्वानही होता. कंसाच्या लक्षात होतं शत्रू जरी लहान असेल तरी त्याला कमजोर समजायचं नाही. प्यार से बोलो राधे राधे. भागवतात ही गोष्ट तुम्हाला फार विशेष करून शिकायला मिळेल. आयुष्यात आपला शत्रू जरी आपला लहान असेल तरी शत्रूला कधीच लहान समजायचं नाही. बघा एखादा करोडपती माणूस असेल आणि जर त्याने शत्रुत्व एखाद्या रोडवरच्या जरी माणसाला घेतला असेल आणि आपल्याला वाटत असेल याच्याकडे काहीच नाही आहे, तरी पण शत्रूला कधीच कमजोर समजायचं नाही. कारण जेवढा नांगाट तेवढा त्रासदायक. नंगे को खुदा भी डरता है. त्यामुळे आयुष्यात शत्रूला कधी कमी समजायचं. मुळात शत्रुत्व हे नकोय जीवनात. पण शत्रूला जर जीवनात झालाच तर कधी कमी समजायचं. कंसाला माहिती होतं माझा शत्रू लहान समजून चालणार नाही आणि म्हणून इमर्जन्सी मिटिंगचं आयोजन केलं.